ધોરણ 6ની અંદર હિન્દીમાં સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવા માટે ભેગા થઈ ગયા। તમે બધા ઓનલાઈન વિડીયો જુઓ છો અને હોમવર્ક પણ કરો છો અને બધા ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ પણ કરો છો। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ નથી કરતા, એ સેન્ડ કરી દેજો। તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથી જ પૂરવાની છે। આપણે ચેપ્ટર 2 પહોંચ્યા હતા, એમાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની થોડીક પુરાવી હતી અને આજે પાર્ટ 1 પૂરાયું, એટલે કે પાર્ટ 2 હજી આપણે ચેપ્ટર 2 જ પૂરવાનું છે। તો પાઠ બીજો છે એ સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપણે પૂરવાનું શરૂઆત કરી દીધી હતી, હવે થોડોક બાકી છે તે આજે પૂરશું। બધા પોતપોતાની સ્વાધ્યાય પોથી લઈ પેન ને એવું લઈ સાથે બેઠજો, સાથે સાથે પૂરતા જઈશું અને હોમવર્ક જે કાંઈ મળે એ ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ પર નંબર સેન્ડ કરી દઈએ। તો ચાલો બધા જ આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરીએ। તો આપણે ગયા લેક્ચરમાં પ્રશ્ન 1 ભણ્યા હતા, વિકલ્પ, પ્રશ્ન 2 ભણ્યા હતા, ખાલી જગ્યા, અને પ્રશ્ન 3માં વિધાનો પૂર્ણ કીજીએ તે આપણે ભણ્યા હતા। એના પછી આપણે પ્રશ્ન 4 પણ પૂરો કર્યો હતો કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય મેં લીખીએ, અને પછી પ્રશ્ન 5માં આપણે આ પહેલો પ્રશ્ન છે એ ભણી ગયા। હવે આપણે પૂરવાનો છે કયો હતો કે બીજો પ્રશ્ન। તો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ તમે બધાએ લખ્યો હતો અને બધાએ પૂર્યો હતો। હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન છે એની શરૂઆત करिए। तो कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो कि एक जगत अने एक ज लोक एवं कवि ने शू काम कीधुं छे? तो आपणे एनो प्रश्ननो जवाब छे ई लखीए। तो कि पहला हूँ अहींयाथी बोलूँ छूँ, पछी तमारे लखवानुं छे। तो कि यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूरज सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकाश प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने कहा है। तो हवे हूँ अहींयाथी बोलूँ छूँ, तमारे लखवानुं रहेशे। तो लखो, यह संसार के एक मानव लोक है, यह संसार एक मानव लोक है, यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, अपनी चांदनी फैलाता है। पछी एक ही सूर्य ना अहींया छेल्ले सूर्य लखेलुं छे, हुं अहींया लखी दऊं तमने। एक ही सूर्य अहींयाथी पछी लखजो एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक है, इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक। ये छेल्ले तमारे लखी नाखवानुं रहेशे अहींयाथी। इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक। तो हूँ प्रश्न हजे एक वार बोली जाऊँ छूँ, जेने नथी लखाणो ए लखी नाखजो। तो कि प्रश्न 3 अहींयाथी शरूआत करूँ। यह संसार एक मानव लोक है, यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही
धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। तो हवे आपणे पहोंच्या प्रश्न 3। एक रक्त का अर्थ समझाए। तो कि एक रक्तनो अर्थ आपणे समझावવાનો छे। तो एक रक्तनो अर्थ एवो थाय छे कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल हो जाता है। रक्त के रंग की समानता से ही साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। तो हवे हूँ आ प्रश्न धीमे धीमे बोलूँ छूं, तमारे बधाए लखवानो रहेशे। तो कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल हो जाता है। હવે રક્ત અહીંયા લખ્યું છે, તમને થોડુંક દેખાત ને, रक्त के रंग की समानता से साबित हो जाता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। एक बार फरी बार बोली जाऊँ छूं। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल हो जाता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। फरी बार प्रश्न पहलो छे बोलूँ छूं। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। प्रश्न 2। एक जगत एक लोक कवि ने क्यों कहा है? तो कि यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। प्रश्न 3। एक रक्त का अर्थ समझाए। तो कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल हो जाता है। रक्त के रंग की समानता से ही साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। तो हवे आपणे आगळ प्रश्न जोईए। तो आ छे तमारो, हवे आवे छे एनी पछी प्रश्न 4। तो कि घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो कि संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, किसी आकांक्षा से मरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। तो हूँ अहींयाथी बोलूँ छूं, तमारे लखवानुं रहेशे।
ધીમે ધીમે હવે બોલીશ, તમારે બધાએ પૂરવાનું રહેશે. તો કે આપણે પ્રશ્ન ફરીવાર એકવાર બોલી લઈએ. તો કે घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो કે સંસાર में, બધા તમે લખજો, હું અહીંયાથી અંડરલાइन કરું છું. તો કે संसार के सभी मनुष्यों के, संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में, सब सुहावने रागों में अपना अपना आनंद प्रकट करें, अपना आनंद प्रकट करें. पूरी मानव जाति में, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो. ऐसी आकांक्षा से, ऐसी आकांक्षा से, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान, भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है, घर घर में गूंज रहा है. હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન 5. सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? તો કે સભી નદીયા છે એ કે અલગ અલગ છે, પછી તો એ કવિ શું કામ કે છે એ એક જ પાણી હોય છે એમાં? તો કે सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को अलग ही एक ही पानी कहते हैं. તો તમે જોયું એમ કે તો હવે હું પ્રશ્ન ધીરે ધીરે બોલું છું, તમારે લખવાનો છે. सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक रचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं. फरी बार बोलूँ छूँ. सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं, एक ही पानी कहते हैं. હવે આવે છે પ્રશ્ન 6 કે प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो कि प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो कि संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म और कर्तव्य है. तो ये બધો પ્રશ્નનો જવાબ છે એ તમારે જાતે લખવાનો રહેશે. હવે આપણે પ્રશ્ન છે એ 6 પહોંચ્યા છીએ કે શબ્દ સારણી. તો કે એમાં આપણને કીધું છે કે शब्द सारणी में उपरोक्त शब्द सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनिया और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो આપણે એમાંથી શબ્દ ગોતવાના છે અને પછી એનો ઉદાહરણ તરીકે લખ્યું છે અહીંયા કે બાઇબલ. તો બાઇબલ ધર્મગ્રંથ છે એમ વાક્ય બનાવવાનું છે આપણે. તો ચાલો આપણે વાક્ય પહેલાં ગોતી લઈએ. તો કે પહેલાં આપણને કયા કયા વાક્ય મળે છે? તો શબ્દ સારણીમાં તમારે આ વાક્ય છે કે મહાભારત, આપણું પહેલું વાક્ય કયું છે? તો કે મહાભારત. તે આમાંથી ગોતવાનું છે. તો આપણને મળી ગયું અહીંયા મહાભારત. તો તમારે બધાએ અહીંયા મહાભારત ઉપર કરવાનું છે. પછી છે પારસી. તો આપણને અહીંયા પારસી પણ મળી ગયું છે. પછી છે અવેસ્તા. તો જોઈએ આપણે
તો કે પછી છે શું આપેલું છે તો કે પહેલાં આપણે મહાભારત ગોઈતું, પારસી ગોઈતું, આ મહાભારત, આ પારસી. હવે અવેસ્તતા, તો કે અવેસ્તા ક્યાં છે તો કે અહીંયા અવેસ્તા. પછી મચ્છિદ, તો મચ્છિદ ક્યાં છે ગોતો તો કે મચ્છિદ અહીંયા છે. પછી હિન્દુ, હિન્દુ કઈ જગ્યાએ લખેલું તો કે હિન્દુ. અને છેલ્લે છે ગ્રંથ સાહેબ, ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ. તો ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ ક્યાં લખેલું છે તો કે અહીંયા ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ. તો તમારે હજે ઘણા બધા એવા શબ્દો બને છે જે અહીંયાથી આપણે ગોતશું. પહેલાં છે એ આપણે જોઈ લેવી. તો કે તમે આ પાછળનું પેજ ફેરવશો એટલે અહીંયા શબ્દ આપેલા છે શીખ, મંદિર, રામાયણ, સાઈ અને મુસ્લિમ. તો એ આપણે 5 શબ્દ પાછળના છે એ પણ આમાં ગોતવાના છે. તો કે એમાં આપણો પહેલો શબ્દ હતો, તમે પાછળ પેજ ફેરવીને જોઈજો કે પહેલો 7મો શબ્દ આપેલું છે શીખ. તો શીખ કઈ જગ્યાએ લખેલું છે એ પણ આપણે હારોર ગોતી લઈએ. તો કે અહીંયા આપણે લખેલું છે શીખ. હવે અહીંયા 7મો શબ્દ જડી ગયો. હવે આપણે 7મો એટલે પછી કયો આવશે તો કે 8મો શબ્દ. તો 8મો શબ્દ પણ તમને યાદ હશે, શું લખેલું હતું તો આપણે જોઈ લઈએ. તો કે 8મો શબ્દ હતું મંદિર. તો આપણે અહીંયાથી મંદિર ગોતો. તો કે મંદિર છે અહીંયા લખેલું છે. હવે હતું રામાયણ. તો અહીંયા રામાયણ પણ લખેલું છે, એ તમારે કરી લેવાનું. પછી સાઈ, તો અહીંયા સાઈ લખેલું છે. અને છેલ્લે હતું મુસ્લિમ. તો અહીંયા પણ મુસ્લિમ લખેલું છે. તો આ બધા ઉપર તમારે પહેલાં રાઉન્ડ કરી લેવાના છે, જે અહીંયા પણ દેખાય છે. અને નીચે આપેલા શબ્દો ઉપરથી નહીં પણ તમે રાઉન્ડ કરી શકો છો. હવે આપણે એના વાક્ય બનાવવાના છે. તો કે મહાભારત, તો મહાભારત મહાકાવ્ય હે. મહાભારત ક્યાં છે તો કે મહાભારત મહાકાવ્ય હે. એવી રીતે તમે ગમે લખી નાખો કે મહાભારત મેં श्री कृष्ण भगवान थे, महाभारत में अर्जुन और उसके 5 पांडवों थे. गमे એ શબ્દ તમે બનાવી શકો છો. હવે આપણે લખીએ તો કે પારસી. તો કે पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. अवेस्ता, तो कि अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है. मस्जिद, तो कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं. तो कि हिंदू, तो कि हिंदू मंदिर में जाते हैं. गुरु ग्रंथ साहेब, तो कि गुरु ग्रंथ साहेब, तो कि गुरु ग्रंथ साहेब कोनो तमने खबर हशे. गुरु ग्रंथ साहेब छे ई कोनो धर्म ग्रंथ छे तो कि शीखोनो धर्म ग्रंथ छे. तो આપણે અહીંયા લખ્યું છે શીખો. આપણે જેમ હિન્દ ગુજરાતીમાં શીખો લખીએ છીએ એમાં અહીંયા સી અડધો ક અને ખો એટલે શીખો કા ધર્મ ગ્રંથ હે. ફરીવાર વાક્ય બોલું છું. महाभारत महाकाव्य है. पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है. मुसलमान मस्जिद में नमाज करते हैं अथवा तो मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं. हिंदू मंदिर में जाते हैं. तो कि हिंदू हमारा धर्म है. गुरु ग्रंथ साहेब, तो कि गुरु ग्रंथ साहेब सिफियों का धर्म ग्रंथ है. एम तमे कोई पण शब्दनो वाक्य आ वाक्य आपेला छे एमांथी कोई पण वाक्य पण केवुं वाक्य तो कि अर्थपूर्ण वाक्य बनावी शको छो. आना सिवाय अने ई पण तमे लखवा होय तो पण तमारे छूटी छे. हवे थोडुंक आपणे आगळ जोईए. तो कि आगळ आपणे कीधुं छे ईते के सीख. तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं. तो कि सिख क्या जाए तो कि गुरुद्वारा में. આપણે અહીંયા શું છે તો કે गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का धर्म ग्रंथ है. मंदिर, यह राम का मंदिर है. यह राम का मंदिर है. रामायण, तो कि रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है. પછી अथवा तो रामायण में राम और लक्ष्मण आते थे. राम और लक्ष्मण थे. પછી મંદિર, यह राम का मंदिर है. यह भगवान का मंदिर है. यह शिव का मंदिर है. તમે કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. સાઈ, તો કે સાઈ એક સંત थे. साई कहते थे एक ईश्वर एक है. પછી સાઈ सबके अल्लाह है. કોઈ પણ શબ્દ તમે બનાવી શકો છો. तो कि मुस्लिम, तो कि ईद मुस्लिम का त्यौहार है. मुस्लिम त्यौहार है. પછી તમે એમ પણ લખી શકો કે मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं. ईद मुस्लिम का त्यौहार है. मुस्लिम
એ મુસ્લિમ લોકો છે એ શેમાં માનતા હોય છે તો કે મસ્જિદમાં, તો કે ઓ નમાઝ ઉસમે પડને જાતે. તમે અર્થપૂર્ણ વાક્ય કોઈ પણ બનાવી શકો છો. હવે આપણે આવ્યા છીએ પ્રશ્ન 7. એમાં વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે, પણ આ આપણે થોડોક આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું. અને ત્યાં સુધી તમારે હોમવર્કમાં જેટલું આપણે અત્યારે ચાલ્યું છે પ્રશ્ન 5 અને આ 6 એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરાઈ ગયાના ફોટા મોકલવાના છે. અને ખાલી પ્રશ્ન 6 છે એ એકવાર રફ નોટમાં લખીને પણ તમારે મોકલી દેવાનો રહેશે. ત્યાં સુધી આવજો. હવે મળીશું આપણે આવતા લેક્ચરમાં.